हाँ $10 सही तो है। $10 में प्याज टमाटर ये सब आता है और क्या लेना है? कैश और बिटकॉइन, आई विल पे यू राइट अवे। Piedra, papel o tijera. तो कैसे हैं आप? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। नमस्कार, मैं संदीप है और क्रिप्टो और हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैं बहुत ही सुंदर सिटी नायग्रा फॉल्स में, और अगर आपको नायग्रा फॉल्स के बारे में नहीं मालूम तो नायग्रा फॉल्स कनाडा और यूएस के बॉर्डर में एक सिटी है, और आप यहाँ से कनाडा क्रॉस कर सकते हैं, यूएस जा सकते हैं उस ब्रिज की मदद से जिसका नाम है रेनबो ब्रिज। पर उसके बारे में वीडियो या व्लॉग कई बाद में बनेगा। आज अगर हम यहाँ आए हैं तो हमें लगा कि नायग्रा फॉल्स में बहुत दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दुनिया में। तो हमें लगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो इनसे पूछें क्या बिटकॉइन के बारे में जानते हैं या क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं, और अगर वो बिटकॉइन के बारे में जानते हैं तो अगर मैं उनको $10 दूंगा तो बिटकॉइन में लेना एक्सेप्ट करेंगे या पसंद करेंगे, या फिर $10 का कैनेडियन डॉलर लेना पसंद करेंगे। तो यही क्वेश्चन पूछेंगे आज हम कुछ भाइयों बहनों से, और जानते हैं उनकी राय क्या है बिटकॉइन के ऊपर, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, और क्या उनको मालूम भी है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, अगर आपका पहले दिन इस चैनल में तो क्रिप्टो हिंदी को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्त शेयर करिए, क्योंकि शर्म किस बात की, भाई का चैनल है। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो भाई, मेरा नाम संदीप है, क्रिप्टो पॉइंट हिंदी से। आपका नाम? चरणजीत सर। चरणजीत नाम है इनका। और आपसे क्वेश्चन पूछना है मुझे, क्या आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं? हाँ जी, थोड़ा बहुत जानता हूँ। थोड़ा जानते हैं। तो आपको लगता है कि बिटकॉइन आने टाइम में कुछ कर सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है कुछ? बिटकॉइन ने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया, अभी और करेगा शायद। भाई की इसी बात में एक लाइक तो बनता है, और एक कमेंट भी कर दो अगर कोई चरणजीत भाई को देख रहा है। अगर आप भी इस वीडियो को बाद में देखें क्रिप्टो हिंदी में तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, सिंस आप बिटकॉइन के बारे में जानते हैं, अगर मुझे आपको $10 कैनेडियन देने हो तो आप उसे बिटकॉइन में लेना चाहेंगे या कैश लेना चाहेंगे? नहीं, अभी तो बिटकॉइन में लेना चाहूँगा। यार मुझे लगा कैश लेंगे, बहुत अच्छी बात है भाई, थैंक यू वेरी मच। बिटकॉइन में लेना चाहेंगे तो पहले भाई चरणजीत भाई ये लेना चाहेंगे बिटकॉइन में, और मैं करता हूँ बिटकॉइन में। अब चलते हैं अपने दूसरे भाई की तरफ। सो अभी हमारे संग हमारे दूसरे भाई, एंड योर नेम इज? Tim, and Tim, you are from? New York. So Tim is from New York, US, and I would like to ask him if he knows about Bitcoin, cryptocurrency in general, and do you know anything about Bitcoin or? Yes, I do. He does. Do you own any Bitcoins? I have some, yes. I have some, which is a good positive sign. So if I have to pay you $10 today, or if you have to accept $10 from anybody, like right now, thinking about future, whatever, will you be okay with accepting $10 in Bitcoin, or do you want cash? I'm not sure I take Bitcoin, yes. Wow, that's it. So that actually shows the positive sentiment of Bitcoin in the people who know or are aware about Bitcoin, which is really good. So anything else you want to say about Bitcoin in general, like where you think it will go? Anything. It can be good or bad, whatever. Well, just like if the adoption, if more people use it, obviously, the more it's going to be used. Remember when internet came to life, right? Yeah. Nobody really thought about using cell phones, right? The cell phones weren't around. The cell phones, smartphones. They were not even like, we cannot even think Exactly. about So it. imagine you a person in the year of 2000, 2001, and you were thinking about internet. You're not even thinking at that time about internet the way we use it today. Why? Because there was no smartphones, right? So if you knew there would be a smartphone in 2005, you'd be like, this is the way of the future. So what I'm saying is that there will be technology with equipment in 2 years, 3 years, 5 years from today that we're going to be using to use the blockchain technology, right? It's not even, you can't even Think about it right now. think about it right now, Yeah. yes. But this is the Bitcoin and the blockchain technology is the internet of the 2000. Wow, that's very good. Tim, so you said you will take Bitcoin, and I'll pay you in Bitcoin. One second, that's my cash thing for people. So now I'm transferring, and I'm giving 10. Okay, here, scan, and I'll do faster. No, it's okay because it will take time otherwise. Priority, right? And continue. My password. But that's okay. You cannot do anything with that. And send. So transaction is complete. Thank you very much, Tim. I really appreciate your time. No problem. And Sandeep from Crypto Point Hindi. Sandeep, thank you very much. तो यहाँ पर हम अपने तीसरे भाई बहन नहीं हैं, अपने हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं वो हैं। तो इनसे पहले जानते हैं कहाँ से हैं और इनका नाम क्या है, उसके बाद ये क्या जानते हैं बिटकॉइन के बारे में। हाय, सो माय नेम इज संदीप फ्रॉम क्रिप्टो पॉइंट हिंदी, एंड व्हाट इज योर नेम? Nice to meet you. My name is Mabiel. We are from Mexico, and she is Vanessa. My name is Vanessa. Vanessa and Mabiel from Mexico. So let's ask them, do you know anything about cryptocurrency or Bitcoin in general? We know something about Bitcoin, but not much. I Yeah. just know
you can use it for transaction by online, right? Yeah, so it's So, faster. Yeah, it's cryptocurrency, it's Bitcoin, and it's very fast compared to money. If I have to pay you something from here to Mexico, it just goes like that. And I'll show you right now if you want to accept it, or I can pay you in $10 if you want to accept the cash. So my question is this: if I have to pay you $10, would you accept? And it can be any answer, right? You can say Bitcoin if you want Bitcoin. If you have wallet, you can say $10 cash. I will pay $10 cash Canadian. So today, if I have to pay you $10, will you accept $10 cash or Bitcoin? Because I don't know, I will accept cash. Perfect. That's perfectly fine. What about you? Uh, Cash? no, maybe Bitcoin. Oh, so there's a conflict right here. You can decide what you want, cash or Bitcoin. I will pay you right away. So you can take second, whatever. तो भाई देखो बीवी से भाई डिसाइड कर रहा है, बातें कर रहा है, जो भी बात करे Piedra, papel o tijera. स्पेनिश में बोलते हैं. Oh, so he cash. So he won $10 Canadian. Thank you very much for being on my Thank you very channel. much. My channel Nice name is to meet Crypto you. Andy. Say hi. Thank you. Bye. Bye. See Thank you. you. From Mexico. Mexico. See you. तो अभी हम हमारे चौथे भाई के संग और नाम पूछते हैं कहाँ से है और वही क्वेश्चन इनसे ही पूछते हैं. So hi, my name is Sandeep from Crypto Point Hindi. What exactly is your name? Cargill, Cardiel. And you're from? Toronto. From Toronto. Perfectly fine. So do you know anything about Bitcoin or cryptocurrency? A little, yes. Okay, so what do you think will be the future of Bitcoin? Do you think it will go up or not? Money-wise, do you think more people adopt it, will know about it, or it will just go down? I think more people will know about Well, it. that's good actually because the way it works is really good. And now, let's say you're in Niagara Falls right now. How are you enjoying? You enjoying it? That's pretty good. You like Niagara Falls? Yeah. Beautiful place. So today, if you have to accept payment, like as of today, right now, let's say if I have to pay you something, $10, will you accept in $10 Bitcoin or $10 cash? Both. Both? Anyone you want to give me, I'll take. Oh wow, that's a really good answer. So do you have any wallet for Bitcoin right now? No, I don't. So since you don't have, I have to pay you in cash, Cash, right? yeah. And anything else you want to add about Bitcoin? Just anything? No, or- I'm just waiting for it to come down. so you can buy. So he wants to invest in Bitcoin. Very good move. Thank you very much. And here is your $10, buddy. Thank you very much for your answer. $10 Canadian. Thanks. Take care. So it will be a little bit in Hindi in the beginning, but I'll let you know what I said. But I'll talk to you in English. Don't worry about that. Excuse me? No, I'm just. something completely different. It has to be in two languages. Okay, right? okay, okay. All right. तभी हम train में हैं और we are on train right now. So I'll ask her if she knows about Bitcoin, and if she knows about Bitcoin, what exactly she knows about it. Plus, if she has to accept payment today for anything, let's say she has a store, will she accept in Bitcoin or cash? And depending on that, she will get $10 Bitcoin and $10 cash right away. So, what's the name? Laura. Laura. Nice meeting you, Laura. My name is Nice to meet Sandeep. you. You're from Canada? Toronto? Yes, Calgary. Calgary, Canada for sure. So she's from Calgary. And do you know about Bitcoin? Like very, very little. Okay, but you have heard about it. I have heard of it, yes. Okay, great. So it's a cryptocurrency, right? And it's based on cryptographic algorithms. You cannot duplicate it. That's the best part. Right. Like you can duplicate US dollar, Canadian dollar. You cannot do that with Bitcoin. Okay, I didn't even know that. And so there's only limits. I would take it in cash. Yeah, that's perfectly fine. It's honest answer. By the way, there's Sandra saying we'll move the camera later on. You can hear them. Yeah. Mostly because I would want to use it right now. You can also use Bitcoin right now. It's just that you cannot use on the train for sure. Or, yeah, I want to use it on the train. that's a fair point. Like the adoption rate is less right now. That's why maybe, right? Yeah, like I wouldn't even know what to do with Bitcoin. I don't have it. I don't know anything about it. Like it'd be almost useless to me. So the thing is, she doesn't know how to use it and doesn't know where she can use it. Maybe there's something to do with awareness, but she has a very fair point. Most of the people don't know what to do with Bitcoin and how to use it. Maybe we can do something about it. But that's really a fair point. And Yeah. do you want to add something else apart from all this about Bitcoin that you know they don't know? I would be very open to like learning about it, and if it was something that was useful and utilized more often, I'd be open to using it. But it's like, to me, in my world, it's just not mainstream at all, and so it's not something I would be interested in. That's a very honest answer. And so right now, if I have to pay you, you will accept $1 cash, which I will do because I did this for the whole video.
I paid random people $10 each for that. So here's the $10. Amazing! So thank you very much. Woo! Nice meeting you. Take it in Bitcoin. Take it in Bitcoin. Take it in Bitcoin. What would you have done if she asked for it in Bitcoin? I would have paid her in Bitcoin right now. Oh my god! How? How much Okay. is a Bitcoin worth? How does that work? Do you need an email? Right now, one Bitcoin worth $7,000. तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैं अपनी बी से पूछ लेता हूँ. आज बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन पूछा. तो मीना, अगर मुझे आपको $10 देने पड़े तो आप बिटकॉइन में एक्सेप्ट करोगी या फिर कैश में? नहीं, इतना मत सोच. बोर्ड के एग्जाम में नहीं आने वाला क्वेश्चन है. ओके, कैश में. कैश में? कैश की ऐश क्यों भाई? कैश क्यों? पति यहाँ बिटकॉइन की बातें कर रहा है. कैश? अब तुम काम भी कर रहे हो बिटकॉइन में और बातें भी बिटकॉइन में कर रहे हो. हाँ. ये मुझे तो यूज उसको कैश में करना है. जो पति धर्म में क्या है? जो पति बोले वही करना है? नहीं, ऐसा भी नहीं. ऐसा भी नहीं है मतलब. मुझे यूज तो कैश ही करना होता है. और क्यों कैश में करना? मैं किसी भी ग्रोसरी स्टोर और शॉपिंग सेंटर अगर मुझे ये सब नो फ्री shopping फूड करनी बेसिस होती है, की गलती से हो रहा है ये. चलो, जिस दिन मीना एक्सेप्ट करेगी, मतलब बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे नो फ्रिल्स या फूड बेसिक्स जो कि यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स हैं या सोबीज, उस दिन मीना जब उसको यूज़ करेगी उसका वीडियो मैं बनाऊँगा. तब बिटकॉइन में लगेगी पेमेंट या तब भी कैश में? तो बिटकॉइन चलेगा फिर. बट ठीक है, फिलहाल मैं तो- $10 को भेजता हूँ फिर. ठीक है, कैश में देता हूँ मतलब. बट $10 हाँ, $10 सही तो है. $10 प्याज टमाटर ये सब आया था. और क्या लेना है? प्याज टमाटर. प्याज टमाटर. बस प्याज टमाटर के लिए $10. चलो ठीक है, मैं दे दूँगा. $100. $100 कम से कम. चलो ठीक है, मेरी बीवी ने मुझे हुक्म दे दिया, $100 दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है. और कैश ना? हाँ, कैश दे दूंगा. और आपको क्या लगता है कि अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो अभी आप बिटकॉइन में लेंगे या फिर आप कैश में लेंगे? कमेंट करके बताइएगा. और वैसे आपकी बीवी गर्लफ्रेंड क्या कहती है बिटकॉइन कैश के बारे में, ये भी आप बता सकते हैं. तो वैसे आज की वीडियो में इतना ही. मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने शेयर करिए. और हाँ, अगर आज आपका पहले चैनल में तो क्रिप्टो वन हिंदी को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि शर्म किस बात की, भाई को चैनल है. हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ.